we come to freedom. Right to freedom. Right to freedom में हमारे पास आर्टिकल्स कौन से आ जाते हैं? आर्टिकल 19 to 22. आर्टिकल 19 to 20. हमारे पास आर्टिकल 19 is right to freedom, which has 6 parts. One part is taken away. Which part is taken away? Article 19(1)(f), which is no longer there. Right to property is not a fundamental right. Right to property is a legal right, not a fundamental right. What is the recent amendment or recent law related to right to property? If government acquires your property according to the law, which was the law related to acquiring of property, the government will pay twice the collector rate in city if it is acquiring a property in urban areas, and 4 times the collector rate if it is acquiring in the villages. So this is the law nowadays. So earlier the government would pay according to it, but now they made it a law. So अगर collector rate 20,000 चल रहा है, the government has to pay 40,000 for it per square. अगर village में एक agriculture land का rate 10 या 80 lakhs चल रहा है, तो government 4 times ज़्यादा देना पड़ेगा, 3.2 crores per acre. The compensation is based upon that. Is it clear or not? Okay. Right to freedom मैंने बात किया. Right to freedom of speech and expression, Article 19(1)(a). Right to freedom of speech and expression में 2 words आते हैं, freely and openly. What does freely mean? Freely means I can choose any medium of communication or visible representation such as gestures, signs and like that. Openly का मतलब है without any fear. Right to freedom of speech में I can give advertisements, I can give publish articles online, I can do whatever I feel. The government cannot stop it. इसमें एक और सब आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 19(1)(a), जो क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस के लिए कोई सेपरेट आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 19(1) में ही दिया हुआ है. राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग. माय फोन कैन नॉट बी टैप. For phone tapping also, first the DGP has to agree, then it has to go to the magistrate who says it is a major threat. Only then your phone can be tapped. Is it clear or not? So what is this? Right to propagate one views as well as others. Right to freedom of press के लिए कोई separate नहीं है. Right to freedom of speech में right to silence भी आता है. If say for example a reporter pushes himself and wants me to answer, I don't have to answer. So there is right to what? Remain silent. Freedom of commercial advertisement. Government has no power over electronic media. Refers the right to telecast. Right against band called by a political party or organization. क्या ये absolute है fundamental rights? नहीं, absolute नहीं है. मैं YouTube पे वीडियो पा सकता हूँ. Yes or no? Can government stop me? No. But if I speak something which is going to be problem for a state where I'm enticing hate speech, or I'm doing any public immorality, or I am trying to break the unity of the country, or I'm defaming somebody, those videos can be banned. Freely or openly तो है, पर एक restriction है. Is it clear? I cannot defame somebody. Is it clear? I cannot speak against the country, or I can speak not against the unity of the country. If I give wrong information, automatically the video would be cancelled. A very good example to you must have heard of Sidhu Moosewala's song, Iswail. It came out, it could have enticed people, so what they did, there was a ban. Clear or not? So right to freedom of speech तो है, but restrictions के साथ. Clear है? Right to press के लिए कोई separate article नहीं है, यही रहेगा. Right to obtain information, RTI, ये add किया गया था. RTI के अंदर क्या है कि अगर मेरे को information चाहिए, within 30 days I go to the appellate authority, 30 days में they have to give me. अगर मैंने wrong appellate authority में कर दिया, transfer करने के लिए 5 days. कहीं पे right to, कहीं पे मेरा ना बहुत important और I needed that very quick information where right to life is involved. तो कितनी देर में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आरटीआई में? 48 hours के अंदर. I can ask in form of both soft copy and hard copy. Is it clear? Whatever is the government rate,
According to that, I have to pay the hard copy rate. If it is not done within that thing, कितनी penalty मिलती है? 25,000. Can a appellate authority deny me RTI? Yes. If it is for the security of the state, I cannot go and ask for defense or weapons. RTI वो तो नहीं file कर सकता ना? Is it clear or not? So there are certain things in which also RTI is not there. Similarly, एक case आया था Supreme Court in Association for Democratic Reforms versus Union of India case in 2002. Right of the citizens and voters to know the antecedents. भाई मेरे को अपने MP और MLA का record पता हो सकता है. He has to file an affidavit beforehand. How many criminal cases are against? If he fails to mention it, automatically his nomination is considered null and so as an voter, I have the right to know what is the person I'm voting for. What are the cases against him? Now that's my right. And then it is up to me whether I choose to vote for him or freedom of assembly. I can travel or I can form associations. I can travel with my friends, but it should be peaceful, without arms. Now, if I travel without, like another example is what you saw in the case of Punjab, Amritpal was moving. They filed him. Freedom of assembly was there. But if you're moving with unregistered arms, there's a case. Clear or not? If I'm moving with registered arms, perfectly fine. But if I'm moving with unregistered arms, that's not there. I have the right to move in assembly. I can call for an assembly, but it should be peaceful. There's again a restriction. It should not be against public order, morality. These things should not be there. The assembly is disordered or riotous, then it is not protected under Article 19(1)(b). I have the right, I have the freedom of assembly, but it should not be riotous. Riot वाला मॉम नहीं होना चाहिए. अगर मैं वही peaceful condition India की, if I'm breaking away peaceful condition of the area or that thing, automatically क्या हो जाएगा? ये right मुझसे curb कर दिए जाएंगे. Clear or not? What are the conditions? The assembly must be peaceful. It must be unarmed, and the state may sovereignty and public order integrity of India. जैसे कि section 144 लगा हुआ है, तो मैं नहीं travel कर सकता. Not more than 4 people are allowed. 3 or 4 people, not more than them, cannot form assemblies. Freedom to form association. Association का मतलब है political, social, cultural. मैं कोई भी association form कर सकता हूँ. Is it clear? I can form any association. It also gives the rights of trade unions. Trade unions form कर सकते हैं. But इसमें एक restriction आ गया, जैसे केस हुआ CPM वर्सेस भरत कुमार. सुप्रीम कोर्ट ने बोला बंद इलीगल है. बंद में मैं क्या कर रहा हूँ? किसी का राइट टू लाइवलीहुड छीन. मैं जबरदस्ती सबको बोलूं कि आज छुट्टी करनी है, आज आपने काम नहीं करना. मैं किसी का लाइवलीहुड छीन रहा हूं, किसी का फंडामेंटल राइट छीन. स्ट्राइक्स आर लीगल प्रोवाइडेड हम पहले क्या दें इंफॉर्मेशन कि हम इस टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं. बट स्ट्राइक्स कौन नहीं कर सकता? ESMA, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस. ये लोग नहीं कर सकते. अब मैं बोलूं पुलिस स्ट्राइक पे चला जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कंप्लीट वायलेशन हो जाए. आर्मी स्ट्राइक पे चले जाए, CF रॉ स्ट्राइक पे चले जाए, इंटेलिजेंस विंग स्ट्राइक पे चले जाए, IT sector strike पे चले जाए. IT as the one who manages the threat. Is it clear? Right to freedom of association means collection of persons who have joined together for a certain objective. People के हम बैठते हैं ना धरने देने, allowed है धरना, but peaceful होना चाहिए. It should not be in any way demeaning the country. So right to protest is there. There's nobody who can stop you from the right to protest. बट अब मैं किसी का लाइवलीहुड नहीं छीन सकता. मैं बोलूं बंद करो, सब बंद करो दुकानें, मेरे को प्रोटेस्ट करनी है, पर किसी और का फंडामेंटल राइट इंक्रोच करके अपना फंडामेंटल. दैट इज व्हाई देयर आर सर्टेन प्लेसेस डेजिग्नेटेड फॉर प्रोटेस्ट आल्सो. जैसे रामलीला मैदान. इज इट क्लियर? पुलिस इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हो, नोबडी स्टॉप्स यू. जंतर मंतर इज अनदर एरिया इन दिल्ली वेयर पीपल प्रोटेस्ट. उनको कुछ कह तो नहीं सकते. दे आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. Clear or not? But again with restrictions. Peaceful. Right to freedom of movement. I can travel anywhere in the country freely without any fear. Again the restriction imposed. जैसे
In Northeast, there is an inner line permit where the tribals are there. So you have to ask the tribal people whether I can move or not. Suppose कहीं पे law and order situation हो, क्या होता है कई जगह पे रेप हो गया, कई जगह पे कुछ हो गया, तो मीडिया बहुत ज्यादा हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है वो एरिया. अब वहां पे ज्यादा पॉलिटिशियन जाने की कोशिश करते हैं टू instigate further. So government can stop you from movement in those cases. Is it clear? The right to freedom of residence. I can again residence में कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ. अगेन इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हमने. कई जगह पे एग्रीकल्चर नहीं ले सकते, ट्राइबल एरियाज में नहीं ले सकते. क्लियर? So there is restriction to this also, but right to freedom of residence है. किसके लिए है? सिर्फ इंडियन सिटीजन. आर्टिकल 19(1)(f) तो खत्म हो गया. राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया? नल एंड वॉइड. किस आर्टिकल में ऐड कर दिया गया है? वो आर्टिकल 300A. कौन सा अमेंडमेंट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया. क्लियर है कि नहीं? कौन से अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल. Right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. Article 19(1)(g). What is definition of profession? Profession का मतलब है कि भाई मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी चीज के लिए. इंटेलेक्चुअल स्किल होना चाहिए. जैसे अब मैं किसी को दवाइयां दे रहा हूँ, मेरे को क्या होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए. ऑर्थोपेडिक किसको देखेगा? बोन्स वाले. कार्डियोलॉजिस्ट किसको चेक करेगा? हार्ट को. अब ये तो नहीं, मैं इंजीनियर के पास जाके तो नहीं बोल सकता भाई मेरा हार्ट चेक कर. So profession means a certain degree. Is it clear? What does business mean? Involving production, distribution and consumption of wealth and so material service. अब इसमें भी ट्रेड और बिजनेस क्या है? सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स. एक्सेप्शंस क्या है इसमें? What are the exceptions to this? First of all, I cannot do something. जैसे अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, विदाउट टेक्निकल एजुकेशन आई कैन नॉट गेट दैट डिग्री. इफ आई वांट टू बी अ लॉयर, अ गवर्नमेंट लॉयर, आई नीड टू हैव अ लॉ डिग्री. इफ आई नीड टू बी अ गवर्नमेंट डॉक्टर, आई नीड टू हैव अ डॉक्टरेट डिग्री. आई कैन नॉट हैव इट जस्ट लाइक दैट. सबसे पहले तो प्रोफेशन में क्या चाहिए? डिग्री. व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड. सो द गवर्नमेंट कैन गिव यू नोटिस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन कि भाई अगर आपके पास ये डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, नहीं तो नहीं कर सकते. क्लियर और नॉट? To become a class 1 officer, I require to be a graduate. है ना? नीचे वालों के लिए 12th पास अलाउड है, पर ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन. तो डिग्री पा दे, कोई भी डिग्री हो. इज इट क्लियर? हाँ, परसेंटेज मैटर करेगी इसमें. डिग्री उसमें चाहिए. अगर मैं बात करूं, सपोज से फॉर एग्जांपल मैं पीजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, तो मेरे को डॉक्टरेट तो डिग्री चाहिए. मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, तो बैचलर की तो डिग्री चाहिए इंजीनियर. वो स्पेसिफाई होता है, प्रोफेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा. क्लियर हो ना? अब जैसे आप एनडीए देते हो, एनडीए में क्या होता है कि आप पास करोगे, ग्रेजुएशन करो, गवर्नमेंट कराएगी. ग्रेजुएशन करके आप ऑफिसर करो. ग्रेजुएशन इज अ मस्ट टू बिकम एन ऑफिसर. वो चीज क्लियर हो ना? अब इसमें क्या चीज नहीं है लॉर्ड? इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन. इसमें हम ये नहीं बोल सकते ये मेरा ऑक्यूपेशन है. डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोसिव, दे डू नॉट कम इन प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड. अगेन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है. एज आई सेड, prostitution. Prostitution is legal only in specific areas, not beyond. Because उसके beyond क्या हो जाता है? अगर मैं एक certain area के बाहर निकल जाऊं, right to health किसी का छीन रहा हूं, मैं किसी का fundamental right छीन के अपना fundamental right नहीं बना सकता. जैसे ड्रग्स में डील कर रहा हूं, मैं किसी का right to health छीन रहा हूं, so that is not allowed. Clear or not? Article 20, protection and respect of conviction for offences. As I said, 20 and 21 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो हमसे कभी भी नहीं छीन सकते. कौन से आर्टिकल में गिवन है? 350. आर्टिकल 20 के अंदर पढ़ते हैं, कई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. व्हाट डज सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन? मैं अपने खिलाफ
I can, अगर मैं पुलिस को कोई भी statement देता हूँ, it cannot be used in the court of law. Otherwise, India would become a police state. Police would say, they've done this, they'll get a signature done from me, that's it. Khatam. There'll be no natural justice. So no self-incrimination means I cannot give an evidence against myself. Clear or not? No double jeopardy. What does double jeopardy means? एक crime की एक ही सजा, cannot have two. I cannot be charged again and again for the same crime. One murder means one. Cannot be given as two. Is it clear? If you've done two murders, it will be plus so and so. For the first murder and the second murder. Second may be culpable homicide. It can be so many things. Intention to hurt. वो different articles लगते हैं ना? Sections लगते हैं. Section एक होता है to intention to hurt. एक होता है unintentionally avoiding to hurt. So वो चीज. Next आपके पास आ गया no ex post facto law. Third thing. जिस दिन क्राइम किया है उसी दिन आपका क्या माना जाएगा? What is the criminal? But this is only in case of criminal, not in case of civil. As I told you, best example is Nirbhaya. During the time Nirbhaya, one of the convicts was below 18. He committed a crime which is very gruesome. At that time, below 18, even for serious crimes, was considered as juvenile. The court, the Indian Constitution or the Indian Parliament decided to change the law. And they decided to make sure that the juvenile age for gruesome crimes is converted from 18 to 16. Now, the person who did Nirbhaya is out. He went to rehabilitation center. The government of Delhi, according to the thing that they have to provide, they provided him some skill set and a sewing machine that you can work for yourself. Now, at the same time, after that, the law was passed. There's a 16-and-a-half-year-old boy in 11th, I think so, Ryan School, he killed his own junior. But now this becomes a serious crime. He's no longer considered as a juvenile. Now he'll be treated like an adult. The severity of the crime in both the cases is very bad. But since when Nirbhaya 1 committed the crime, what was the age of this? Below 18. Now, when this boy committed the crime, what was the age of juvenile? Below 16. So he was above 16. So he is now being treated as an. So when you commit the crime, what the imprisonment or what the jail term would be, only that will be there, not anything more than that. Clear or not? Now we come to another very important article for us, that is right to life and personal liberty. Article 21 is right to life and personal liberty is something different. Now, right to life does not mean in our constitution only living. As citizens, we have been given certain rights to live, to make our life meaningful. Like best example is I can get married to any person. If I'm of a legal age, my parents cannot stop me. If you're about 21 and you want to get married to somebody and parents say no, you can go to the court. The court will provide you protection. Court says we are giving protection. There's so many cases in which we see girls' parents coming to court and saying, oh, please don't get married, this and that. The judge says, listen, what is your age? He or she says, I'm above this. They look for the proof. They say, the couple will say, sir, they want to kill us. They want to do this. The court will say, I'll provide you security. Don't worry. So once I'm a certain age, I have the right to live. So Article 21 is also available against citizens. Because I can file this article against my own family or as an individual, anybody. Is it clear or not? Is it clear? So there are a number of instances. That is right to life. Right of a couple to adopt a son is right to living. Right against suicide. I have the right against suicide. I don't like for that. Right to passive euthanasia. Was it passive euthanasia? It came in the case of Aruna Shauba, a nurse I told you also was raped. She went in a vegetative state for 42 years. Passive euthanasia means we can only take away the life support machines. Active euthanasia is still not allowed in it. So there is right to passive euthanasia.
So अगर मेरे को लगता है मेरी लाइफ नहीं चल रही मशीन के बिना, I have the right to switch off the machines. Life support machines. That's the right to live. Right to live has different content. It is not only right to living. Live का मतलब सिर्फ जीना नहीं है. To make your life. इसमें एक और आता है right to live में, right to breathe proper air. This happened in Delhi. Why do you think the crackers are not being burst in Delhi? So it was a PIL filed by a 3-year-old and a 5-year-old. Of course, they did not do it. The parents did it. They said with the pollution, my lungs do not have the right to breathe. आप तो मेरा right to breathe छीन रहे हो. The court said, sorry, for this reason, we are going to ban crackers in Delhi. Even now, this year, Diwali में crackers नहीं burn. Or we can burn green crackers or whatever they had burned. So, our right to breathe is also my fundamental right. Right to have water is also my fundamental right. Right to life में आता है. This is something the government has to guarantee. The government cannot guarantee. What is the champion cause for it? We go to the Supreme Court. मेरा fundamental right है. अगर court 3 साल के बच्चे की बात सुन सकता है, as case of fundamental right, they can listen to anybody. Is it clear? I'll just show it to you the case that was there. PIL filed by 3 infants makes Supreme Court ban crackers. There are 3 students who one was all aged between 6 months and 14 months. A PIL was filed. They said so much of pollution. My lungs cannot take this much of pollution. So the court now decided that it's going to ban what? Crackers in Delhi. Study shows citizens of India have 30% lower lung capacity than Europeans, and the children are facing this. Because of this, the Supreme Court said sorry. So that's the right to life. The right to life अकेला मतलब life नहीं है, बहुत चीज. कितनों को पता था कि छोटे छोटे बच्चों में ऐसे क्रैकर बन. So it's right to breathe. उसका right to fundamental right है ना उसका बच्चे का. हमारी lungs तो बड़ी हो चुकी हैं, उनकी बहुत छोटी हैं. Their lungs are not going to develop that way. Is it clear or not? So what happens even is, better case. Let me explain. Right to die with मरे हुए आदमी को भी, if a person is dead, he also has the right to dignity. A very good example is during COVID time, a lot of bodies were found floating in the river Yamuna. The court came heavily on the government. They said, sorry, even these people who are dead, they have the right to die with dignity. So you arrange wood for them. You make sure that they are either burned or buried alive properly. So even if I'm dead, I still have a right as a citizen. So right to life is that big. That's why the Article 21 cannot be taken away at any point of time. Because right to life का मतलब सिर्फ right to living नहीं है. Right against speedy right for speedy trial. अगर मेरा speedy trial नहीं होता, मेरा डेथ पेनल्टी लगा हुआ था, 20 साल हो गए केस चलता हुआ, वो ऑटोमेटिकली डेथ पेनल्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइफ इन प्रिजन. As I said, let me show you 2 more examples for it. The right to decent burial during pandemic times. So this was the case where right to decent burial under Article 21. हमें ये पता होना चाहिए आर्टिकल क्या कहते हैं, कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज आएगी. क्लियर और नॉट? ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो वो ट्रिकी बना देते हैं. वो बोलेंगे भाई इसमें बताओ क्या होएगा. सो राइट टू डिसेंट बेल इज आल्सो आर्टिकल 21. राइट टू लाइफ में आ जाता है. अगर सपोज किसी की बॉडी क्लेम ना कोई करे तो उसका फ्यूनरल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. सो इवन इफ आई डाई, आई हैव अ राइट टू लिव और डाई विद डिग्निटी. राइट टू डाई विद डिग्निटी में केस सुप्रीम कोर्ट में आया कि डेथ पेनल्टी देने के लिए या फांसी लगा या फिर इंजेक्शन पा दे. इंजेक्शन पे स्टडी विद दे सेड 1 in 1000 में देयर इज अ चांस ऑफ हिम नॉट गेटिंग डेड टू क्विकली. ही माइट सफर. सो मरने के लिए भी सफर नहीं करना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? राइट टू हैंगिंग. सो दे रिजेक्टेड द राइट टू इंजेक्ट. Clear or not? So
अगर मरना भी है उसमें भी राइट टू डाई विद डिग्निटी है। अगर कोई आदमी मरता है उससे पहले उसके रिलेटिव्स बुलाए, जैसे निर्भया में था, दे वर गिवन टाइम टू मीट देयर रिलेटिव्स, ओनली आफ्टर दैट द प्रोसेस इज बीइंग टेकन। सो राइट टू लाइफ इज राइट नॉट टू कमिट सुसाइड, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इसकी बहुत ज्यादा कॉन्टरनेशंस हैं। बस याद रखो जो चीज मेरी जिंदगी ठीक करे या फिर एज ए ह्यूमन मेरी जिंदगी ठीक करे वो किस में आएगा, राइट टू लाइफ। इज इट क्लियर और नॉट? Right to shelter, right against cruel punishment, right against denial of wages, right to speedy trial, right to live in unpolluted environment. I give you an example, Delhi में क्रैकर बैन क्यों हुआ, पीआईएल फाइल कर दी बच्चों। राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, अगर डिलेड एग्जीक्यूशन होएगा तो क्या हो जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। राइट टू डाई विद डिग्निटी, इवन इफ यू आर डेड देन आल्सो देयर इज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी। Right to sleep judgment on the police लाठी चार्ज at रामलीला मैदान on बाबा रामदेव, they said sleeping के टाइम पे नहीं कर सकते। Right of women to be treated with decency and dignity, right to privacy, right to marry the person of your own choice। Article 21 क्या बोलता है कि भाई मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। Is it clear? That is Article 21। अब हम बात करते हैं right to personal liberty। Procedure established by law, it's a doctrine which originated in written. Procedure established by law means that judiciary will only look whether the law is passed to the effect or not। ये ब्रिटेन से लिया। I gave you an example, हम बात करते हैं आधार बिल। सबसे पहले तो कोर्ट में गया केस कि आधार बिल मनी बिल नहीं है, ये होना चाहिए फाइनेंशियल बिल। तो कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 110 करेक्ट है, मनी बिल ही है और इसको सही तरीके से पास किया गया तो ये बिल करेक्ट हो गया। ये क्या था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दूसरा आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? क्या ये लॉ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स करेक्ट है कि नहीं है? गवर्नमेंट कोर्ट ने बोला नहीं, आप किसी की राइट टू प्राइवेसी छीन रहे हो आधार बिल में, तो ये तो कैंसिल हो गया। आधार बिल रहा बट राइट टू प्राइवेसी क्या हो गया, जो ये बिल ले रहा था वो कैंसिल हो गया। दैट्स व्हाई गिव यू बेस्ट एग्जांपल इज कोर्ट्स के अंदर यू डोंट हैव टू गिव योर, सॉरी, इन केस कोर्ट सेड इन केस ऑफ योर अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, यू डोंट हैव टू कनेक्ट इट विद आधार। ओनली दोज बेनिफिशियरीज जिसको मनी जाती है दे हैव टू कनेक्ट देयर अकाउंट्स विद बैंक अकाउंट्स विद आधार। इवन देन अगर नहीं कनेक्टेड, it is the duty of the government to provide him those benefits। clear or not? तो ये क्या था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर पर्सनल लिबर्टी की बात करो, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू गो अब्रॉड है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन है, राइट टू बेल है, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग है। बेल भी दो टाइप की होती है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, मैं बोलूं कि मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हैं, इससे पहले मैं बेल ले लेता हूं, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटेड बेल। I'm anticipating that there might be a case to me, so I say I'm not going to go anywhere। interim bail होता है थोड़ी देर के लिए। Is it clear? Right to write a book, I can have the right to write a book। Right against solitary confinement, I am not allowed to be confined। Right to socialize, under trials not to be kept with convicts। जब तक मैं convicted नहीं हूं, मैं under trial, I cannot be kept with convicts जिनके अगेंस्ट केस हो चुका है। अब इसके अंदर एक और आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन। कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया गया है ये, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इट वाज आल्सो एडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्या कहता है, 6 to 14 years compulsory education to children, free and compulsory education to children। Article 22, protection against arrest and detention in certain cases। इसमें दो टाइप की डिटेंशन होती है, एक होती है प्रिवेंटिव, एक होती है प्यूनिटिव। जब मैंने क्राइम कर लिया उसको बोलेंगे प्यूनिटिव। एक होता है क्राइम करने से पहले, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। Punitive is when you have committed the crime। Punitive detention
is to punish a person for an offense committed by him or her after trial and conviction in a preventive means detention of a person without trial and conviction by a person for past offense, but to prevent him from committing an offense in the near future. सबसे पहले तो अगर मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, मेरे को अरेस्ट वारंट देना पड़ेगा. I have to be told the reason for it. Second, I have the right to call up my lawyer also. First, no person shall be detained in custody without being informed क्यों किया जा रहा है. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within 24 hours of such arrest, excluding the time for transfer. छुट्टी नहीं मानी जाती, छुट्टी वाला दिन नहीं, जो ट्रांसफर 24 hours के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के साथ. Is it clear? And you also have the right to a legal practitioner of your choice. I can go to any lawyer. So right to defend मिलता है मेरे को. Article 22. अब इसमें एक्सेप्शन आ गया. किसके लिए नहीं अप्लाई करता? टू एनी पर्सन हु इज एन एनिमी और एलियन. एनिमी एलियन का मतलब क्या है? हु इज एन एनिमी ऑफ अ कंट्री, हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री बट ऑफ अ, लाइक से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई सिटीजन. To any person or detained under any law providing for preventive detention. Article 22 says that these rights are not available to the enemy aliens. And secondly, the person detained under preventive detention. दो को नहीं मिलेंगे rights. एक तो preventive detention, एक enemy alien. Right against custodial death भी आ चुका है. ये भी right to live with dignity है. Article 21 में custodial death होती है तो जो Human Rights Commission वाले हैं वो बोलते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे. किसको? जो कस्टडी में मिला. Safeguards against arrest or detention made under preventive detention. Preventive detention किस किस केस में लगता है? जैसे टाडा में संजय दत्त के केस लग गया फॉर कीपिंग वेपन्स. ऐसा ही एक और लॉ है मकोका, मुंबई में, महाराष्ट्र का. ऐसा एक और लॉ है अगर मैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में. एक एग्जांपल, एक वीडियो है ऑनलाइन. जैसे जज उससे वो प्लीड कर रहा होता है आदमी, सेइंग दैट कि सर मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, मैं बाइक चला रहा था, मेरे पास तो चरस निकली है, मेरे पास तो नहीं थी, मेरे साथ वाले का चरस निकली है. तो जज से कितनी निकली है? 10 ग्राम. कितना होती क्या है 10 ग्राम? सो जज इज टेकिंग हिज उसका मजाक उड़ा रहा था. होती कितनी है 10 ग्राम? सो द प्लीडर ऑफ हिज सेज 10 ग्राम 2 लाख है. 10 ग्राम 2 लाख. कहता आप बैठे रहो, बहुत देर बैठना है हमने जेल में. सो इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है फिर नहीं मैं बाहर आ सकता. इज इट क्लियर? साइकोट्रोपिक ड्रग्स. इफ आई एम नाउ इन ड्रग्स देयर आर टू थिंग्स. इफ आई एम अ कंज्यूमर, मेरे पास कम क्वांटिटी है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी गेटिंग बेल बिकॉज आई एम नॉट अ थ्रेट. द वन हु इज सेलिंग इज द थ्रेट. In case of Aryan Khan, they were trying to prove that he is the one who's supplying. If I say I'm a consumer, automatically, if very little quantities are observed, I am a consumer. I'm not a threat. Ulta, I'm being pushed by the society in like that. The court takes an alternative view. But if I'm a supplier, then it becomes a big problem. और preventive detention किस में होती है? Terrorist activities. एक और में आ जाती है UAPA. What is UAPA? Unlawful activities. Is it clear? Prevention Act. In case when I'm doing sedition में preventive detention लग जाती है. मेरे को I'm not going to be brought in front of magistrate within 24 hours. Is it clear? अगर मैं hoarding of goods कर दूं, इससे क्या होगा? जैसे suppose मैं onion hoarding करने लग गया, मैं रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया, वो मेरे पास एक certain amount से ज्यादा foreign currency हो, फॉरेन एक्सचेंज फीमा लग जाएगा. क्लियर? सो ये सब एक्ट्स के अंदर क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन में advisory broad, this is there. A person arrested under preventive detention cannot be detained beyond 3 months. If he has to be detained beyond 3 months, his detention shall be approved by advisory committee board. तो 3 महीने के लिए आपको अरेस्ट कर सकते हैं. आपको कोई जज के सामने लेके जाना नहीं. किसके सामने लेके जाएंगे? बाय सिटिंग जज ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट.
The other two members must be sitting or retired judge of the High Court. The opinion of the advisory board confirmed the detention must be obtained before the expiry of 3 months of detention. कौन से में था, मैंने बताया था मीसा मकोका है, इस पे भी एक सीरीज बन चुकी है. नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस आ गया, एनएसए आ गया, टाडा आ गया आपका, और क्या आ गया, फॉरेन एक्सचेंज का आ गया, नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस आ गया, कोटा आ गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. इन सब में आपके लिए क्या होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लगेगा. क्लियर और नॉट? दैट इज व्हाट वी हैव. अब हमने सारे रिवाइज कर लिया. आर्टिकल 19 टू 22. आर्टिकल 19 क्या, फ्रीडम. 20 क्या है, व्हाट इज 20? 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 20 क्या है, राइट अगेंस्ट व्हाट, मेरे डबल जेपर्डी नहीं हो सकती, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. 22 क्या है, डिटेंशन. इसमें क्या आ जाता है, बोथ प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव. सेफगार्ड्स आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अगर अरेस्ट करते हैं मेरे को रीजन बताना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के सामने लेके अंदर जज तहसीलदार मैजिस्ट्रेट, यस फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, और आई हैव द राइट टू डिफेंड लॉयर के पास अगर मैंने बताया. प्रिवेंटिव में क्या है, जहाँ पे आपको ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, या तो आप एलियन हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन. फॉरेन एक्सचेंज है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, ये चीजों में आपको क्लियर है कि नहीं. दैट इज आर्टिकल 22. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम के आर्टिकल आ गए. दैट्स व्हाई ये फंडामेंटल राइट्स हमसे नहीं लेंगे.